Hello friends, I am Nisha Sharma, Associate Professor, Department of English. In yesterday's class, we talked about personal or friendly letters. We have discussed the rules and regulations, and today there are two specimens before you. First is specimen is simple. First is a letter to your friend congratulating him on his brilliant success in the examination. आपके मित्र को परीक्षा में सफलता मिली है, उसे बधाई देते हुए. Just as we discussed, the address of the sender is on the right hand side, and the salutation is for personal relations, my dear, और friend नहीं लिखा है, my dear John. I am so glad to hear of your brilliant success in the examination. You have topped the list and won a scholarship to my heartiest congratulations. Now the body of the letter. The news of your success has delighted us all beyond measures. Everybody here is dancing with joy. We are proud of you. You have shown the way to all your friends. It is our will that shapes our destiny. And the closing of the letter is, I have no doubt, you will rise from glory to glory. May your success open for you all the golden gates of opportunities. Best wishes. Sincerely yours, राहुल. इसी तरह से दूसरा लेटर है, अ लेटर टू योर सिस्टर एडवाइजिंग हर टू रीड न्यूज़पेपर. इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिए. नाउ कम्स ऑफिशियल लेटर्स. ऑफिशियल लेटर्स आर रिटर्न टू बिजनेस एंड और ऑफिशियल्स. एंड ऑफिशियल लेटर टू हैज़ 5 पार्ट्स. जैसे कि आपने पर्सनल लेटर के 5 पार्ट्स देखे थे, ऑफिशियल लेटर के भी 5 पार्ट्स हैं. सेम. फर्स्ट इज हेडिंग. इट इज़ द सेम एज इन पर्सनल लेटर्स. एड्रेस, डेट. वी ऑल्सो नीड एट द नेम ऑफ द फर्म और डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल एंड द ऑफिशियल्स एड्रेस. इट इज़ रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. द पॉलिश कमिश्नर, न्यू दिल्ली. नो कॉमा इज यूज्ड आफ्टर. टू यूज द यूज ऑफ टू इज ऑप्शनल. The current trend is not to write to. Then the salutation. कैसे होगा? Sir, madam, dear sir, not respected sir, madam, dear sirs अगर एक से ज़्यादा लोग हैं. It is written just below the name of the firm, designation of the official and the official's address, and a comma is used after salutation. Now the body of the letter. The quality of good business letter is clarity and precision. कम से कम शब्दों में अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दें, ये क्वालिटी बिजनेस लेटर्स में होनी चाहिए. It is not advisable to use instead. Instead we write, I thank you for your letter of 15th August. Closing. Forms of subscription are officials को yours faithfully, yours truly. The latest style is not to close a business letter like this. I have the honor to be, sir, your most obedient servant, Rahul. Then name. Superscription. Address on the envelope. कैसे लिखा जाता है? It is the same as the inside letters. From, name and address, and to, name of the firm, designation of the official. अब देखिए एक सैंपल हम ऑफिशियल लेटर का भी देखते हैं. ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट बैड रोड्स एंड ट्रेन. यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो लिखा है, दैट इज़ योर एड्रेस, 48 डॉक्टर्स कॉलोनी, पटना, February 5, 2002. और किसको लिख रहे हैं? डेजिग्नेशन क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को लिख रहे हैं, तो द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, पटना. सर,
Through the columns of your esteemed newspaper, I should like to invite the attention of the authorities to the bad roads and drains of this locality. Most of the roads looks like the corrugated iron sheets. These bumpy roads are quite unfit for cars and buses and even for bullock carts. There is something wrong with drains too. There is waterlogging even in summer. So the whole area is full of flies and mosquito, causing serious health hazards. I hope the authorities will do the needful before it is too late. Thanking you, yours faithfully. नीचे आपने अपना नाम लिख दिया. इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है एक एप्लीकेशन का. हेडमास्टर को कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फुल फ्रीशिप आपको दें. तीसरा हम इसमें एक है जो लेटर्स ऑफ इनविटेशन. देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इनविटेशन. पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल. जैसे पर्सनल है वहाँ पर इनफॉर्मल और जो ऑफिशियल है वो फॉर्मल. Formal invitation is written in the third person, so the use of I or you of a personal letter is avoided. It does not have the heading, salutation and subscription of a personal letter. Writer's name is incorporated in the body of the letter itself. Writer का नाम अलग से नहीं है, letter में ही है. Address of the writer and date are written below on the left. Left side में नीचे लिखा जाता है. RSVP is written at the bottom on the left hand side of the letter. RSVP is an abbreviation for a French expression means please reply. The reply to such a formal invitation is written in the third person and the date time mentioned in the letter is usually repeated. Now there is a sample of a formal invitation. Mr. and Mrs. R.P. Sinha request the pleasure of Mr. and Mrs. Mr. John Brown's company at dinner on Monday, November 7 at 8 p.m. RSVP 48 Doctors Colony, Patna. Telephone number. अब इसका एक्सेप्टेंस का भी एक सैंपल हमारे पास है. Mr. and Mrs. John Brown thank Mr. and Mrs. R.P. Sinha for their kind invitation to dinner on Monday, November 7 at 8 p.m. and have great pleasure in accepting it. और नीचे उन्होंने अपना एड्रेस दिया है. अब इसी तरह ये तो एक्सेप्टेंस था. अगर हम नहीं जाना चाहते तो उसका रिफ्यूज़ल का है. Mr. and Mrs. John Brown thank Mr. and Mrs. R.P. Sinha for their kind invitation to dinner on Monday, November 7 at 8 p.m. but regret that owing to circumstances beyond their control they will not be able to come. ये तो था हमारा ऑफिशियल इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल इनविटेशन. An informal invitation is like an ordinary friendly private letter. It is addressed to person by name. So you is used instead of third person. जैसे 48 Doctors Colony, Patna. Telephone number, date. Dear John, my wife and I will be extremely glad if you join us at dinner at 8 p.m. on Monday, November 7. Best wishes, yours sincerely, R.P. Sinha. और फॉर्मल एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल क्या है? Dear Raj, thank you for your kind invitation. I shall be delighted to join you at dinner on Monday, November 7. Best wishes, yours sincerely, John. अब स्पेसिमेन ऑफ एन इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल. अगर हम इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका भी सैम्पल है ये. डियर राज, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर ऑन मंडे, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई शैल नॉट बी एबल टू कम एज आई विल बी अवे ऑन एन ऑफिशियल टूर. बेस्ट विशेज, योर्स सिंसियरली, जॉन. Thus, now you are familiar with the rules and regulations to be followed while letter writing. And the more you practice, the more you will learn. So, thank you. In our next lecture, I'll give you a few exercises to done.
थैंक यू।